guys, कैसे हैं आप सब? It's me Simi and welcome to another super exciting episode of La Maison L'Oréal Paris, your one stop for everything related to makeup. So subscribe करना ना भूलिएगा and साथ ही साथ hit on the bell icon which is right next to it so that you are notified and updated every time we upload a new video. So चलिए start करते हैं आज का वीडियो. अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिना मास्क पहने तो हम घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं. So आज मैं आपको एक ऐसा full face of glam makeup look सिखाऊंगी जो काफ़ी long lasting रहेगा, crease नहीं होगा, transfer नहीं होगा और smudge भी नहीं होगा while you're wearing a mask. So start करते हैं आज का makeup look. Now when you're doing a long lasting makeup look, make sure that your base is your base product is strong enough to be sweat proof, transfer proof and smudge proof. And for that the foundation that I'm going to be using is the L'Oréal Paris Infallible Pro Matte Foundation. I'm in the shade 106 Sun Beige. Now this is a matte foundation and you don't really need a lot of it. I'm just going to take like one drop of this on my hand. And इतना काफ़ी है because ये बहुत easily spread हो जाता है and it's like full coverage, it's matte and it's long lasting. It's kind of the perfect foundation that you would require for this look. And I'm going to apply this with a brush today. So I'm using a foundation brush and start applying it on my face like that. So I'm going to just start stamping it on my face. And अगर आप brush use कर रहे हैं तो make sure कि आप ऐसे soft circular motions में प्रोडक्ट अप्लाई करें. पहले इसको स्टैम्प कर लें प्रोडक्ट को एंड देन ब्लेंड इट इन सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस लाइक दैट. इससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी इवनली ऑल ओवर स्प्रेड हो जाएगा एंड देयर विल बी नो स्ट्रीक्स ऑन योर फेस बिकॉज काफ़ी लोगों को ब्रश से एक ही कंप्लेन होती है कि वो स्ट्रीक मार्क छोड़ देता है. दैट इज़ बिकॉज यू डोंट गो इन राउंड सर्कुलर मोशंस लाइक दैट. तो एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से मेरी रेडनेस, मेरी स्पॉट्स, all of the pigmentation, everything is just concealing and covering everything so well. And it's super matte, as you can see. It's matte, it's got that nice coverage, so I know for a fact that this is going to last very very long. So now once I've applied the foundation with my brush, आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए एंड जस्ट रन इट ऑल ओवर योर फेस. इससे आपके फेस पे कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट, कोई भी एक्सेस फाउंडेशन होगा जहाँ पे भी, वो उसको पिकअप कर लेगा. कोई भी ब्रश के स्ट्रीक्स मार्क्स अगर रह चुके होंगे तो वो इवन आउट कर देगा और आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ बना देगा. एंड दैट्स इट. So now the next step is a concealer. I'm using the L'Oréal Paris Infallible Full Wear Concealer in the shade Amber. अब concealer लगाना इसलिए भी important है कि आपकी under eyes, आपका face थोड़ा और brighten लगेगा और इसलिए भी important है कि आपके face पे अगर कोई extra pigmentation, dark circles, कुछ redness, कोई spots वगैरह हो तो वो भी concealer से अच्छे से cover हो जाता है. And now the main reason why I'm using a concealer in this video is because concealer लगाने से आपके base को एक double layer मिल जाएगी, एक another layer of strength मिलेगी so that your makeup can last longer even when you're wearing a mask. So I'm using this and I'm just gonna apply it underneath my eyes and on the bridge of my nose to just brighten up my my T-zone area, on my forehead. I'm also going to apply a little bit around just right across the hollows of my cheeks. I'm going to take slightly more और मेरे face पे जो छोटे छोटे marks और जो acne scars रह चुके हैं उसके ऊपर मैं एक और layer लगा दूँगी concealer की so that they are nicely covered and concealed. I'm going to start blending it. और जब भी आप अपने under eye area पे कोई concealer या foundation use कर रहे हैं with the beauty blender, make sure you're always using the pointy part of it because that just helps you to go right into all of those nooks and crannies while you're applying the foundation and concealer around your eyes. And that's it. Alright, so let's move on. But before that, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा. Go hit on that like button right now and also subscribe to our channel क्योंकि हम काफ़ी ऐसे मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे. एंड ऑल्सो शेयर विद अ फ्रेंड. एंड अगर आपके पास और कोई टिप है, कोई ट्रिक है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज आवर आईज बिकॉज वी आर वेयरिंग अ मास्क एंड आवर आईज आर द ओनली थिंग दैट्स विजिबल. सो मेक श्योर योर आई game is on point and it's glamorous enough. So with that
I'm coming to the next product, which is the L'Oreal Paris Super Liner Gel Intensa. So now the reason that I'm using the gel liner is because ये transfer proof है, ये smudge proof है. एक बार आप इसको लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी smudge नहीं होता, ये बिल्कुल set हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर. तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक smudge smoky soft wing. तो मुझे स्मच करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज 30 सेकेंड्स में ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेट हो जाता है. तो यू गेट लाइक जस्ट 30 सेकेंड्स. मैंने ये प्रोडक्ट अपने ब्रश पे ले लिया है एंड आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द आउटर कॉर्नर लाइक दैट. एंड आप अपने ब्रश को ऐसे एक 45 डिग्री एंगल पे इसको रख के राइट एट द कॉर्नर ऑफ योर आई इसको स्टैम्प कर लिए, जिससे कि आपको एक विंग की एक लाइन मिल जाएगी. एंड देन उसी लाइन को आप अपने लैश लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दीजिए ऑल द वे टू योर इनर कॉर्नर लाइक दैट, जिससे कि आपको एक बाउंड्री, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा अपने विंग लाइनर के लिए. एंड देन आप उसको फिल कर लीजिए. और ये सब आपको काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइनर बहुत जल्दी सेट होने स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप अपने स्किन पे इसको लगाएंगे. जस्ट स्टार्ट फिलिंग इट अप एंड देन एक ब्लेंडिंग ब्रश अपने पास रखिए. तो अब मैं एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेने वाली हूँ और इसके आउटर कॉर्नर्स को हल्के हाथों से ब्लेंड करने वाली हूँ. मेक श्योर यू डू इट रियली फास्ट बिकॉज एक बार अगर ये लाइनर सेट हो गया तो आप इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं कर पाएंगे. सो मेक श्योर यू यूज़ अ वेरी जेंटल हैंड एंड जस्ट गो इन लेफ्ट राइट मोशंस. ऐसे लेफ्ट राइट मोशंस यूज़ करने हैं स्मच करने के लिए. Alright, I'm kind of done with the blending, so now I'm gonna do the exact same thing on the other eye as well. And with that, I am kind of done with my smoked out winged eyeliner. It looks very pretty and very very delicate. तो मैंने एक beginner friendly wing eyeliner वीडियो बनाई है. अगर आप वो देखना चाहते हैं, अगर आप एक beginner हैं तो ये वीडियो काफ़ी हैंडी होगी क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी टिप्स और काफ़ी बेसिक हैक्स शेयर किए हैं जिससे कि आपके विंग लाइनर बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी. एंड विद दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अ मस्कारा. सो आई एम यूजिंग द L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara today to finish off with my eye look. Now again ये प्रोडक्ट भी वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है. तो अगेन इट्स अ परफेक्ट मस्कारा टू गो विद योर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक. आई एम गोना स्टार्ट राइट फ्रॉम द रूट्स एंड इसको विगल करते हुए अपने लैशेस के टिप तक लेकर जाइए, जिससे कि आपको काफ़ी लेंथ, काफ़ी वॉल्यूम और एक पुश और एक लिफ्ट भी मिलेगा, जिससे कि आपके लैशेस ऐसे कर्ल्ड और काफ़ी ओपन अप हो जाएंगे. एंड दैट्स इट. विद दैट माई आई मेकअप इज कम्प्लीट. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज अ लिपस्टिक. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द L'Oreal Paris Root Signature Liquid Matte Lipstick today. And I'm going to be using this as my blush tint today. So basically before I apply my powder blush, I'm going to just give a nice strong base for my blush. And because ये lipstick waterproof है, transfer proof है, smudge proof है, so it's gonna be a perfect base for my blush today. तो लगाने से पहले इसको मैं अपने fingers पे अच्छे से warm कर लूँगी. And then I'm gonna just use my fingers और इसको मैं हल्के हाथों से अपने cheeks पे dab करूँगी. And this will ensure that आपके blush पे एक double layer है, एक strong layer है, so that your blush can last longer. And now the next step is to apply a powder blush on top of your tint, जिससे कि आपका blush as I said will last longer. So उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oreal Paris का La Barre blush in the shade City Explorer. And ये shade actually काफ़ी मिलता जुलता है to the tint that I used earlier. And I'm gonna take a big fluffy brush like this, जिससे कि blush काफ़ी easily आपकी skin पे, आपके cheeks पे spread हो जाएगा. And then I'm gonna start tapping it right on the apples of your cheeks. And इसको काफ़ी हल्के हाथों से मैं अपने hairline के साथ blend कर लूँगी like that. Now the formula of this blush is actually powdery with a little bit of cream base to it, जिससे कि आपका blush actually काफ़ी long lasting रहेगा. And that is it. So with that I'm done with my blush. And ये अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, but as soon as you step outside it's gonna look very natural and it's gonna blend in with your skin. And with that, moving on to the next step, which is a highlighter. So I'm gonna be using the L'Oreal Paris La Barre blush highlighter in the shade Be Brave.
And now you want to use a highlighter which is again transfer proof. It is blendable but at the same time does not smudge on your face, and that's the reason I'm using this highlighter. Again, I'm going to show you two-step process as to how you can get your highlighter to last very long on your skin. So first step में मैं एक fan brush use कर रही हूँ जिससे कि मैं highlighter को काफ़ी easily अपने face के high points पे लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं इसको अपने forehead पे भी लगाऊंगी. And make sure you blend everything with your hairline जिससे कि ये काफ़ी natural और seamless look create हो. And there are no harsh edges on your face. And now I'm gonna also apply a little bit of the same highlighter right above my brow bone. And with that, moving on to the second step of highlighter, which is applying it for the second time. So now this time I'm going to be using a round fluffy brush like this, which will give me a very precise application. Alright, so now that I've applied my highlighter, I'm going to set it with a little bit of setting spray on my Damn Beauty blender, and I'm going to use this blender and I'm going to run it all over my face just to make sure कि मेरा highlighter blend हो गया है and जो भी excess powderiness होगा वो सारा इस blender में आ जाएगा, and then it'll look very nicely blended in with my skin. This is actually a really good trick and a really nice method to make sure that your highlighter actually blends in with your highlighter, with your face, with your makeup, because अगर आप 2 बार हाइलाइटर अपने फेस पे लगा रहे हैं तो कभी कभी आपका हाइलाइटर काफ़ी थिक और काफ़ी पैची लग सकता है आपके मेकअप के ऊपर. सो ब्लेंडर वाले ट्रिक से आपका हाइलाइटर काफ़ी सीमलेसली आपके मेकअप के साथ ब्लेंड हो जाएगा. एंड दैट इज़ इट. It looks really pretty and glamorous already, and with that I am ready to move on to the next step, which is basically finishing off the makeup look. For that I'm going to be using the L'Oreal Paris Rouge Signature Liquid Matte Lipstick, and I am using the shade 115. I'm worth it. So now the reason that I'm going for this lipstick is because I'm wearing red, so I thought I'll just create a nice classic wing liner with a red lip kind of a look. So with that, this is the finished look. I hope you enjoyed all of the hacks and all of the tips that I've shared to keep your makeup long lasting and sweat proof and transfer proof underneath a mask. अगर आपके पास भी कोई ऐसा hack है जो आप मेरे साथ share करना चाहते हैं, then please let me know in the comment section and I would love to try it out. And all the products that I've used in today's video are mentioned in the description box below. जाने से पहले subscribe करना ना भूलिएगा so that you are updated with all of the makeup tips and tricks, and also hit on the bell icon so that you do not miss out on even one single episode of La Maison L'Oreal Paris. And with that, signing off for now. Stay home, stay safe, and I'll see you next time. Bye!